हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन लाइफ। मेरा नाम रिचा है और मेरी एक 3 ईयर ओल्ड डॉटर है जिसका नाम शाइन है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी शाइन से रिलेटेड ही है, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट ऑल बुक्स आई यूज़ फॉर हर बेड टाइम स्टोरीज एंड हर ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। बेसिकली जब भी हम अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं और मेरी जनरली मेरे फ्रेंड्स ये चीज़ पूछते हैं कि तुम अपनी डॉटर के लिए क्या क्या बुक्स रेफ़र करती हो, क्या एक्टिविटीज़ करती हो जिससे उसकी स्पीच इतनी क्लियर है, इतनी साफ है। उसी के लिए आई जस्ट थॉट दैट आई शुड मेक दिस वीडियो सो दैट हो सकता है आपको भी किसी को ये मेरी जो डिस्कशन पॉइंट है ये आज आगे आपको हेल्प करे। टू स्टार्ट विद आई विल टेल यू कि मतलब मैं शुरू से ही जब वो इवन बहुत ही छोटी थी, लाइक 1 month ओल्ड, सो द डे शी वॉज बॉर्न, आई यूज टू इंटरेक्ट विद हर लॉट। मैं उसको बहुत सारी राइम्स सुनाती थी, स्टोरीज सुनाती थी तभी से। सो आपको भी पता है कि कोई भी छोटा बच्चा कभी भी मतलब बोल के तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट उनके सबकॉन्शियस में वो सारी वोकैबलरी, वो वर्ड्स, दे दे एब्जॉर्ब थिंग्स, ठीक है। वो आपको रिस्पॉन्ड भी करते हैं हाथ हिलाकर, अपने लेग्स मूव करके। दे एक्नॉलेज दैट वॉट एवर यू आर टेलिंग देम। शी ऑलवेज यूज टू डू दैट। शी यूज टू ब्लैबर अ लॉट, तो उससे पता चल जाता था कि जो भी आप बोल रहे हो वो समझ रही है, या मतलब वो सुन रही है या एब्जॉर्ब कर रही है वर्ड्स को। दिस इज़ वन थिंग। इससे क्या होता है कि आपका जो एक बॉन्ड है आपकी बेबी के साथ वो भी बहुत इजीली स्ट्रेंथन होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैं कोई चाइल्ड एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस विद माई डॉटर शाइन। सो पास्ट 3 सालों में मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ उसके साथ की हैं, कौन कौन सी बुक्स उसको मैं रीड करके देती हूँ, उसके साथ क्या क्या एक्टिविटी इन द सेंस लाइक व्हाट ऑल बुक्स वी यूज़ फॉर राइटिंग, वो मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी विद बुक्स दैट आई हैव। मैंने शाइन को बुक्स जो हैं वो बहुत ही अर्ली स्टेज में इंट्रोड्यूस कर दी थी। स्टार्टिंग विद दैट 9 months, when she was 9 months old, I bought this book. आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी ब्रांड, आप कहीं से भी ले सकते हैं इन बुक्स को। इट इज़ जस्ट दैट आई बॉट दीज बुक्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज, और वो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कहाँ से ली हैं। मे बी यू कैन ऑल्सो check with the same store, or probably go to that website and get that book. This is the first book that I bought for her. This is called my first activity book. ये एक कपड़े की बनी हुई बुक है। इट इज़ वेरी ईजी फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ स्मॉल लिटिल बेबी टू होल्ड इट, ग्रैब इट, एंड अगर वो मुंह में भी डालता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वॉशेबल। आप इसको ईजिली वॉश करके यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, and even isme you see there are like lots of concepts that are made clear. If you see, it's very colorful, and it helps them with their mental growth. If you see, इसमें काउंटिंग है, कलरफुल, यू कैन सी द ट्रेन, द बस, how it opens. तो बच्चे को ये बहुत सब चीज़ें इंटरेस्ट देती हैं। See the watch, the house. I am completely in love with this book when I got it. Even Shine also loves it. Till today she uses that and plays with this book. The second book I introduced to her was this one. It is my first touch and feel sound book, which is Noisy Baby Animals. This is also a very good book. इस बुक में क्या है कि आपका बच्चा एक तो फील कर सकता है, टच कर सकता है, हियर कर सकता है। इट इज़ अ 3D काइंड ऑफ अ बुक. इट इज़ अ वेरी स्टर्डी, इट इज़ अ बोर्ड बुक, right? It has got tactile textures. If you see, you can feel the skin of the penguin, see the sound. It's a very adorable book, and it is an interactive book. इसमें क्या है कि ये एक this book also enhances the hand-eye coordination of a child, and it helps in the cognitive behavior of the child also. ठीक है, ये parent और child का interaction भी increase करती है. You can probably try using it. There are like different animals that are shown here. If you see, this is a
puppy, and what sound does it makes. Then it is a penguin, then it is a cub, then it is an elephant. So there are like different animals out here which you can get for your child. So I'll tell you. I forgot to tell you. I bought this book from Hamleys, and I bought this book online from Amazon. So the third set of books that I introduced to my daughter was this one, which is my first library of books. So it has got a count of 10 books. It's a set of 10 books, so which has a lot of numbers, transport, animals, colors, ABC. So a lot of things are there in these books. I completely like these books because one, these are smaller books, तो आपका बच्चा बहुत ही आसानी से इनको पकड़ सकता है, देख सकता है, और इसमें कम से कम वर्ड्स लिखे हुए हैं. So it's more of a picture book. ठीक है? So if you see the counts also, they're like you can count the things and you can make your child learn. So these are very interactive books. Same goes to like I'll show you the vegetable ones. It's a hardboard book. ठीक है? So अगर मतलब your child can hold it any which way he wants to. So yeah, see, this is such an interesting book. It genuinely helps helps your child to identify different things, be it fruits, vegetables, colors, shapes, etc. And उनकी vocabulary build होती है, इससे observation skills develop होते हैं. So these books are like really good, and they have helped Shine a lot to to remember what things are out there. And yeah. So the next set of books that I gave to Shine was I'll show you. I have done a lot of rhyming to her, a lot of rhyming. So मैं उसको बहुत ही छोटे से like from I told you ना कि जब से वो 9 महीने की थी मैं उसको बहुत सारे poems, श्लोक्स सब सुनाती थी मैं उसको. ठीक है? So this book I used it because this is quite a big book and it has lots and lots of pictures. ठीक है? It has a collection of all nursery rhymes. ठीक है? जितने भी हम जैसे बचपन में पढ़ते आए हैं वो सब इसमें है. ठीक है? So और इसमें इतने सुंदर illustrations हैं, the child will automatically get attracted towards the colors that are there in this book. ठीक है? So it is a great way of learning and interacting with your child. You see, yeah, it is a very nice book. So I just bought this book specifically this book from Big Bazaar. इसमें बहुत सारे animals हैं, rhino, then your kangaroo, then squirrels, lots of animals are there, so your child can really learn from them. So it is a chief medium of imparting knowledge to your child and educating them about what all animals are there in the world. ठीक है? So इसमें उनको एक जो पिक्चर और वर्ड के साथ जो रिकॉग्निशन स्किल्स है ना वो उनमें डेवलप होते हैं, and it is a wonderful book to learn from. So this other book that I introduced to Shine was these big 400 words. So ये words book मैंने इसलिए उसको इंट्रोड्यूस की बिकॉज डेली लाइफ में और प्रॉब्ली व्हेन वी गो आउट हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो इसमें जो भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग ये बुक है. So it has everything, starting from your shapes, your colors, your food that children eat, your 5 senses, your body parts. So it has everything, family tree, then winter clothes, summer clothes, toys. So it has even electronic equipments. So everything has been mentioned here for 400 words. So ऐसी जो बुक्स होती है ना ये आपके बच्चे की जो ओवरऑल सेंटेंस मेकिंग एबिलिटी है उसको एनहांस करती हैं, एंड इवेंचुअली योर चाइल्ड इज एबल टू कन्वे व्हाट दे वांट टू से थ्रू द कम्युनिकेशन. Boards. So one was this Melissa and Dog board, which is an ABC board. So this is very interesting and very good for a child to learn the alphabets and to learn what all words are associated with that alphabet and how to, so you can probably tell them how to pronounce them as well. So so this is a wooden board. I got it
from First Cry. It's very interesting. Your child can pick a piece of this alphabet, so it's very handy for a child to hold and learn from it. See, yeah. So next is this 1-2 board book. So this is also very helpful, and it helps a child to learn the colors and same time learn the numbers. So also it has plus, minus and equal to. So this also helps them like recognize the symbols which are there and the counting till 20. These books. So these are basically the pads. Dog, I got it from First Cry. So Shine has little spoiled them by using it, because she has used it like anything. From past 2 years she is using this. So these so what happens is, whenever you do a color on this, so color with the water and let it dry and color it again. So it is something which is reusable, and you get a pen like this, you can fill water inside, and it could be used for coloring the a drawing. Yeah. So this is another one. This is also the water magic. So it's a similar book. So you can probably color it. It gets dry once you are done with it, and the child can do it again. It's all reusable. तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं सिर्फ इंग्लिश बुक्स ही नहीं यूज़ करती हूँ, मैं हिंदी बुक्स भी यूज़ करती हूँ. So I'll show you some of the story books that I use for her. So this is a story book which is called The Very Hungry Caterpillar. This is again a board book. It's a hard book. So इस book में basically you get information, the child gets information कि days of the week क्या होते हैं, what all fruits are there, what all vegetables are there, and there is a very beautiful moral that for a child कि आपको junk food नहीं खाना चाहिए. You eat healthy, you will feel healthy as well. So it's a very good moral for a child to learn at an early age. So what has happened is, मैं शाइन को बहुत टाइम से ये बुक सुना रही थी. But from past 3-4 months, what she has started doing is, she has started recognizing the words, and now she is also forming the sentences, और वो अब मुझे सुनाती है. So which is a very good thing, and I think this bedtime story routine is working well for me. Is The Goodnight Moon. It is a very colorful, again a board book. It's a hard book. It's a classic bedtime story. He rhyme driven hai. For example, kittens and mittens, a toy house and a mouse. Then next is a hush and a mush. So इस तरह के words भी इन्होंने use किए हैं. So which is a very good rhyming thing. I completely loves this book. Maybe स्टोरीज जो होती है ना, अगर हम बात करें तो पंचतंत्र इज समथिंग जो हम भी अपने बचपन में पढ़ते आए हैं, एंड आई थिंक आवर चिल्ड्रन शुड ऑल्सो रीड इट. सो ये एक क्लासिक स्टोरीज हैं ये सब, विच गिव्स योर चिल्ड्रन वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स. ठीक है. सो इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स के साथ द एंटायर स्टोरी इज डिपिक्टेड. So ये शाइन को ये stories बहुत पसंद है, so we read them a lot, and these are quite eye catchy जो pictures हैं, they are like very nice. So I think every child who is a 3-year-old or probably 2 years old, उसके लिए ये illustrations बहुत ही interesting और fun activity की तरह है. Shine ko, I always wanted her to read some mythological stories also. So this is the reason I introduced her these 5 books which are mythological tales, which are very important for every one of us. So one is Ramayana, then is the Hanuman story, then is Ganesha story, then is Krishna story, and then Mahabharata. So उसके गणेशा और हनुमान तो उसके फेवरेट गॉड्स हैं और फेवरेट कैरेक्टर्स भी हैं स्टोरी बुक्स के. सो शी लव्स हियरिंग अबाउट देम. सो वो हर रात को वो इनको सुन के ही वो उसे नींद आती है. अब दानिश मैंने बहुत सारे कलरिंग के बुक्स भी उसको दिए हैं, एंड शी लव्स डूइंग कलरिंग. So every medium she has, almost every medium she has tried out,
She loves it. So it is, wax crayons. You can give them, और पोस्टर कलर्स. तो पोस्टर कलर्स जनरली मैं खुद साथ में बैठती हूँ और तभी करवाती हूँ. अदरवाइज वो बहुत मेसी सिचुएशन हो जाती है खुद के लिए भी उसको क्लीन करना. So these are all the books that I give her. So you just try and add some variety to it so that your child is not bored. So I have got, animals, vegetables, then toys, then fruits, then shapes, then transport, Hanuman coloring book, and Ganesha coloring book. So I have a lot more of these books. So I have introduced all these books to her. So ये सारी books, उनकी जो जितनी भी बच्चों की जो मोटर स्किल्स हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, ये सब एनहांस होता है, एंड उनकी इमेजिनेशन एंड पेशेंस इज इनकलकेटेड इन योर चाइल्ड. चीज़ है जो मैंने शाइन को इंट्रोड्यूस की है, विच आर दीज नॉर्मल ड्राइंग बुक्स. सो आई गेट अ स्टॉक ऑफ दीज बुक्स अ लॉट. ठीक है, क्योंकि शाइन को कलरिंग बहुत अच्छी लगती है, तो वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती है. शी विल कीप ऑन मेकिंग समथिंग और द अदर थिंग. शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू कलर, यूज डिफरेंट. शी यूजेज लॉट्स ऑफ, so right now I just give her 3 mediums, which is your wax crayons, and next is poster colors and the water colors. So यही 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके लिए, मैं उसको देती हूँ वो करने के लिए. वन मोर थिंग आई वुड टेल यू, सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए मतलब उसके पास होना बहुत ज़रूरी है, वो है ये ब्लैक बोर्ड. दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, कि कितना भी आप कुछ भी कर लो, योर चाइल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स. See, it has got 2 ways. One is your writing board as well as the blackboard. I prefer this blackboard because it's easier to clean, and child can probably use it n number of times without, Yeah, this was pretty much it for today, and I will come back with another vlog. Thank you for joining here. Thank you for listening to me. So please, before leaving, do like, share and subscribe. Please hit the bell icon so that you can get the notification for the channel. Thank you. Stay smiling. Bye.